संस्कृत साहित्य शास्त्रे व्याकरण शास्त्र से प्रभाव विषयमिमं अधिकृत्य स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तौमि। संस्कृत काव्यशास्त्रं यथा भारतीय दर्शनस्य विभिन्नैः सिद्धान्तैः प्रभावितं तथैव इदं व्याकरणशास्त्रस्यापि प्रचुरं प्रभावं बिभर्ति। व्याकरणं हि मूलं सर्वशास्त्राणां। काव्यशास्त्रीयेषु ग्रंथेषु प्रथमतया अभिधादीनां शब्दशक्तीनां यद्विवेचनं विहितं तत्र शाब्दबोध विचारणा संदर्भे पदवाक्यादीनां लक्षणस्य विचारे संकेतग्रहस्य साधनानां विषयाणां च विमर्शे सर्वत्र व्याकरणशास्त्रस्य विषय विवेचनम् अपेक्षते। ध्वन्यालोके ध्वनिलक्षण संदर्भे आचार्य आनंदवर्धनेन सम्यक् प्रतिपादितं। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणः व्याकरण मूलत्वात् सर्वविद्यानाम्। इदमेव ध्वनि सिद्धान्ते ध्वनि शब्द प्रयोगस्य मूलम् यत् प्रथमं वैयाकरणैरेव प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसारिभिः ध्वनि प्रस्थापन परैः आचार्यैः न्यग्भावित वाच्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य यथा स्फुटति अर्थः यस्मात् सः स्फोटः इति व्युत्पत्त्या पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत अंत्यवर्ण प्रतीत्या स्फोट सिद्धान्तः प्रवर्तितः। यथा च वैयाकरणैः अस्मिन् विषये ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः कृतः तथैव आनंदवर्धनादिभिः आचार्यैः ध्वनिशब्दम् अंगीकृत्य ध्वनति स्फोटं व्यनक्ति इति ध्वनिः व्यंग्यार्थ व्यंजकस्य शब्दार्थ युगलस्य कृते ध्वनिः इति पदं प्रयोज्य ध्वनिनाम्नैव स्वसिद्धान्तः प्रचालितः। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थ मुपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ध्वनि शब्दस्यापि आचार्येण अभिनवगुप्तेन व्याकरण शास्त्र व्युत्पत्तिम् आश्रित्य एव ध्वनतीति ध्वनि ध्वन्यतेति ध्वनि ध्वननं ध्वनि इत्यादीनि ध्वनि निर्वचनानि निरूपितानि। यथा ध्वनेस् तथा रसशब्दस्यापि निर्वचनं कृतम् आचार्यैः। साहित्यदर्पणे विश्वनाथेन वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति काव्यं लक्षयता रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगः प्रतिपादितः। नाट्यशास्त्रे भरतमुनिः भावानां प्रसंगे व्याकरणगत व्युत्पत्ति दृष्ट्या प्रश्नम् उत्थापयति। किं भवन्तीति भावाः किं वा भावयन्तीति भावाः। पुनश्च नाट्य प्रसंगे स
ऋजंत व्युत्पत्तिमेव साधीयसीम मनुते। नाट्य काव्य साहित्य रीति वृत्त्यलंकारादय सर्वे पारिभाषिका शब्दा व्याकरणगत व्युत्पत्ति साध्या एव काव्यशास्त्रे प्रयुज्यन्ते। नाट्यशास्त्रे अभिनय विवेचन प्रकरणे वाचिकाभिनयं व्याचक्षाणो भरतः वाग् ही सर्वस्य कारणम् इति मूलत्वेन पाणिनीय व्याकरणम् आधारीकृत्य एव वाचिकाभिनयं विवृणोति। आगम नामाख्यात निपातोपसर्ग समास तद्धितैर्युक्तः संधि वचन विभक्त्युपग्रह नियुक्तो वाचिकाभिनयः। तदनन्तरम् आचार्य संस्कृत वर्णमाला विभागं विशदीकृत्य शब्द स्वर व्यंजन नामाख्यातोपसर्ग निपात प्रत्यय तद्धित विभक्ति संधि पदादीनां शब्दानां पाणिनीय व्याकरण सम्मतां व्युत्पत्तिम् अर्थंच कारिकाभिः प्रकाशयति। अतः वागभिनयस्य समग्रं शास्त्रं पाणिनीय व्याकरण शास्त्रमेव आश्रित्य अग्रे सरति। भावप्रकाशने निजग्रंथे आचार्य शारदातनयः भावशब्दस्य व्याकरणसंगतां व्युत्पत्तिम् इत्थं प्रस्तौति। भाव स्यात् भावनं भूति रथ भावयतीति वा पदार्थो वा क्रियासत्ता विकारो मानसोऽथवा। श्रृंगार प्रकाश इत्यभिहिते बृहति काव्यशास्त्रीय ग्रंथे आचार्यो भोजराज प्रथमं शब्द प्रकरणं विवृणोति। स आदिषु षट्सु प्रकाशेषु पाणिनीय व्याकरणम् आधृत्य एव शब्दस्य विस्तृतां व्याख्यां प्रस्तौति। प्रकाशानां नामान्यपि व्याकरणाधृततया क्रमशः प्रकृत्यादि प्रकाशात्मा प्रातपदिक प्रकाश प्रकृत्यादि शब्द प्रकाश क्रियाद्यर्थ चतुष्टय प्रकाश विभक्त्यर्थादि चतुष्टय प्रकाश इत्यादि रूपेण कृतानि। शब्दस्य प्रकृतिं प्रतिपादयन् आचार्यः कथयति। शब्दार्थ भावनायां प्रत्ययात् प्रथमम् उपादान कारणमेव योपादीयते तां प्रकृतिरिति व्यपदिशन्ति। सा त्रिधा धातुरूपा प्रत्ययरूपा प्रातिपदिक रूपा च। पुनरिमां त्रिविधाम प्रकृतिं प्रत्येकं सषोडा विभजति। यथा प्रत्ययरूपां प्रकृतिं स सुप्तिं कृत्तद्धित धातु प्रत्यय स्त्री प्रत्यय भेदात् षट् प्रकारां स्वीकरोति। तथैव धातुरूपां प्रातिपदिकरूपां प्रकृतिं चापि सः षोडा विभजति। पुनः तापि भेदप्रभेदैः व्याकुर्वन् आचार्यो नैकानि रूपाणि प्रस्तौति। यथा तदंतर्गतस्य कृदन्तस्य षड्भेदान् निरूपयन् स कथयति। कृत षड् भाषायां ते तु कृतः क्रियारूपाः क्रियाफलरूपा क्रियाविशेषणरूपा
क्रियावधि रूपा, क्रियाकर्म रूपा, क्रियावयव रूपाश्च भवन्ति। विशेषेण ध्यातव्यमिदं तथ्यम आश्चर्यकरं च यद श्रृंगार प्रकाशस्य आदिभागभूता षट् प्रकाशा साहित्य शास्त्रीय ग्रंथत्वेपि पूर्णतः अष्टाध्यायी अनुसरण पराः परम मौलिक व्याकरण सिद्धांतानां प्रतिपादकाः इत्यहो व्याकरण शास्त्रानुगामिता साहित्य शास्त्रस्य। ध्वनि प्रस्थानस्य प्रस्थापकेन आनंदवर्धनेन ध्वन्यालोके असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनेर द्योतकत्वं यत् प्रतिपादितं तत् समग्रतया व्याकरण पथानुगामित्वमेव दधाति। अस्मिन् विषये कृता कारिका अधोलिखिता वर्तते। सुप्तिं वचन संबंधैः तथा कारक शक्तिभिः कृतधित समासैश्च द्योत्यो लक्ष्यक क्रमः क्वचित् नूनं काव्येषु सुविशेषै तिंग विशेषै वचन विशेषै संबंध विशेषै कारक शक्तिभिः कृत विशेषै तद्धित विशेषै समास विशेषै निपातोपसर्ग कालादिभिः प्रयुक्तै ध्वनेरात्मा रसादि रभिव्यज्यमानो दृश्यते। तत्कृते सर्वोत्तमम् उदाहरणम् उदाहृतं यथा न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरस्तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् शक्रदितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनै किमेभिर्भुजै। अत्र मेति पदे एक वचन विभक्तिर्व्यंजना यद जगत्यैकवीरस्य लोकोत्तर पराक्रमशालिनो मेपि अरयः अत्र बहुवचन प्रयोगः मम शत्रु सद्भाव असंभव इति संबंध अनौचित्यं व्यनक्ति। तत्रापि शब्देन निपातेन अत्यंतासंभवनीयत्वं व्यज्यते। तापस इत्यत्र मत्वर्थीयस्य अणप्रत्ययस्य प्रयोगात् रामस्य दीनत्वं पुरुषार्थहीनत्वं क्षीणदेहत्वं क्षुद्रयतित्वं च व्यज्यन्ते। असौ पदेन रामस्य हीनावस्थायाः अतिशयिता द्योत्यते। रावयतीति रावणः इत्यनेन रावणस्य त्रैलोक्य पीडाकारकत्वं द्योत्यते। सोप्यत्रैव इत्यत्र अव्ययद्वय प्रयोगेण रावणस्य अमर्षोत्कर्षो व्यंजितः। इंद्रजित इति पदे भूतकालिक क्विप्रत्यय प्रयोगे मेघनादस्य इंद्रविजये अनास्था सूच्यते। उच्छूनै इति कृदंत प्रयोगे निरादर सूचकत्वं ग्रामटिकेति स्वार्थिक तद्धित प्रयोगस्य स्त्री प्रत्यय सहितस्य अबहुमानास्पदत्वं प्रति विलुंठन शब्दे विशब्दस्य निर्दयावस्कंदनं प्रति वृथा शब्दस्य निपातस्य स्वात्मपौरुष निंदां प्रति तथैव भुजैरिति बहुवचनेन भुजानां भारमात्रत्वं प्रति व्यंजकत्वम्। अत्र यद व्यंजकभूयस्त्वं घटमानं दृश्यते तत्सर्वं व्याकरणगत चमत्कारितमेव वर्तते इत्यहो व्याकरण प्रयोग विशेष समाश्रितं
सकलम व्यंजना विहित सौंदर्यम। येषां सर्वेषां व्याकरण तत्वानां पृथक पृथक उदाहरणानि नैकानि ध्वन्यालोके सम्यक उपन्यस्तानि। ध्वनि सिद्धांतस्य प्रत्युत्तर रूपेण विकासमाप्ते वक्रोक्त सिद्धांतेपि व्याकरण संबंधी बहुभी प्रयोगै वक्रताया प्रदर्शनम जातम। स्वकीय वक्रोक्त जीवित नामके ग्रंथे आचार्येण कुंतकेन पद पूर्वार्ध वक्रताया ये अष्टौ भेदा प्रतिपादितास्। तेषु विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, लिंग वैचित्र्य वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता च व्याकरणे नैव संबद्धाः। यथा पद पूर्वार्ध वक्रताया स्वरूपम निरूपयति कुंतकः। वर्ण विन्यास वक्रत्वं पद पूर्वार्ध वक्रता वक्रताया परोप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः। पदस्य सुबन्तस्य तिङन्तस्य वा यत्पूर्वार्धं प्रातिपदिक लक्षणं धातु लक्षणं वा तस्य वक्रता वक्रभावो विन्यास वैचित्र्यम्। सन्त्यन्येपि वक्रताया प्रकारा यथा कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, प्रत्यय वक्रता, पद वक्रता, वाक्य वक्रता इत्यादयः। पुरुष वक्रतायाः विचारावसरे आचार्यः आत्मनेपद परस्मैपद प्रयोगेपि वक्रतां विचारयति। पद वक्रतां व्याचक्षाणः कुंतकः कथयति। यस्यां वक्रतायाम् उपसर्ग निपातयोर वैयाकरण प्रसिद्धाविधानयो रसादिद्योतनम श्रृंगार प्रभृति प्रकाशनम। नूनम रामस्य सीता वियोगे चिंता संवलितः संभ्रम अस्मिन् पद्ये समुन्मील्यते। वैदेही तु कथम भविष्यति हा देवी धीरा भव। अतः वक्रोक्त विवेचनमपि पाणिनीय व्याकरणं समालिंगदेव। यथा संस्कृत काव्यशास्त्रे शब्द शक्ति विचारणा संदर्भे रस निष्पत्ति प्रसंगे ध्वनि लक्षण विमर्शे काव्य भेद विचारावसरे काव्य गुणदोष समीक्षणे बहुत्र व्याकरण शास्त्रस्य विषय विवेचनम अपेक्षते, तथैव विविधालंकार विचार चर्चायामपि व्याकरण शास्त्रस्य भूमिका सुष्ठु सिद्ध्यति। शब्दालंकारा भवन्तु अर्थालंकारा वा यत्रापि व्याकरणस्य मूलत्वं तत्र तद्विना अलंकारस्य अस्तित्वमेव न स्थापयितुं शक्यते। क्वचित् लक्षणेषु क्वचित् उदाहरणेषु शब्दशास्त्रस्य सत्ता स्फुटं लक्ष्यते। यथा स्वयं अलंकार शब्दः अलंकरोति इत्यलंकारः इति व्याकरणगत व्युत्पत्त्या सिद्धः, तथैव शब्दालंकारेषु प्रथमः अनुप्रासालंकारः अनुगतः प्रकृष्ट रूपेण आसः न्यासः इति त्रयाणां शब्दानां संयोगेन निष्पद्यते। यथोक्तम् आचार्येण मम्मटेन रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासो नुप्रासः। अर्थालंकारेष्वपि अनेके सार्थक व्युत्पत्ति सिद्धा योगरूढ़ शब्दाः यथा तेषु प्रथमोऽलंकारः उपमा उपपूर्वकात् मांग माने इति जौहोत्यादिकान् मा धातो आतश्चोपसर्गे इति पाणिनि सूत्रेण करणे अंग प्रत्यय कृते निष्पद्यते। उप
मीयते अनया इत्युपमा इति विग्रहेण यथोक्तम उप समीपे मीयते परिच्छिद्यते उपमानेन कर्त्रा उपमेयं कर्म अनया इत्युपमा। उपमावत् उत्प्रेक्षा शब्दोपि उत प्र ईक्षा चेति त्रयाणां शब्दानां समवायेन संघटते यस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थः व्याख्यातो यथा उत्कटा प्रकृष्टस्य उपमानस्य ईक्षा ज्ञानम उत्प्रेक्षा पदार्थः। अनेनैव विधिना अन्वय रूपक तुल्योगिता प्रतिवस्तुपमा अर्थांतर न्यासादीनां अलंकाराणां सत्ता व्याकरणगत व्युत्पत्त्यापेक्षयैव सिद्ध्यति। संस्कृत काव्यशास्त्रीयेषु ग्रंथेषु शब्दालंकाराणां यानि उदाहरणानि उदाह्रियन्ते तत् प्रायेण व्याकरण नियमानुपालनेनैव शब्द परिवृत्त्यसहत्वम् अतएव अलंकार विशेषस्य अस्तित्वं सिद्ध्यति। यथा वक्रोक्त्यलंकारस्य श्लेषरूपा द्व्यर्थकता व्याकरण नियमानुसारं विग्रह भेदेन सिद्ध्यति। पद्यांशेत्र वामानां प्रियमादधाति हितकृन् नैवाबलानां भवान्। वस्तुतः प्रथम पक्षे वक्तुः आशयो यत् भवान् अबलानां हितकृत् हितं करोति इति रूपेण, परंतु श्रोता तस्य वाक्यम अन्यथा योजयति अबलानां हितकृत् हितं कृन्तति इत्यर्थे। अत्र वक्रोक्त चमत्कारस्य प्राण धारणं व्याकरण सिद्ध धातु प्रयोग वैभिन्येनैव संभवति। तथैव सामर्थ्य कृद अमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः इति प्रकृति श्लेषोदाहरणे सामर्थ्यं करोति इति सामर्थ्यकृत मित्रपक्षे पुनः सामर्थ्यं कृन्तति इति सामर्थ्यकृत अमित्रपक्षे संगच्छते। अत्रापि डुक्रियकरणे कृति छेदने चेति धातुद्वयस्य प्रयोग भेदेन अत्र श्लेषत्वं संपाद्यते। लाटानुप्रासालंकारेपि समास विषयकं यन्नियोजनं विधीयते तदपि व्याकरणगतम् एव। वृत्तावन्यत्र तत्र वा नाम्ना स वृत्त्यवृत्त्योश्च सित कर कर रुचिर विभा विभाकराकार धरणिधर कीर्ति पौरुष कमला कमला साप तवैवास्ते नान्यस्य इत्यस्मिन् उदाहरणे एकस्मिन् समासे भिन्नेवा समासे समासा समासयोर्वा प्रातिपदिकस्य यत् सारूप्यं भवति तल्लाटानुप्रासे कारकतत्वम्। यमकालंकारस्य सर्वेष्वेव भेदेषु यानि उदाहरणानि संभवन्ति तेषां द्व्यर्थकता व्याकरणाश्रयणेनैव चरितार्था भवति। यथा अधोलिखिते पद्ये कठिन शब्दबंधे ससारसाकं दर्पेण कंदर्पेण ससारसा शरन्नबाना बिभ्राणा ना विभ्राणा शरन्नबा। अत्र प्रथमं ससार इति स्त्री धातु परोक्षे लिटि रूपम, परंतु ससारसा इति शब्दे सारसै स विद्यते या सा इति विग्रह। दर्पेण कंदर्पेण इति पदयो भिन्नार्थकत्वं स्पष्टम। पुनः नवाना इति पदे नवम अनम शकटम यस्या सा इति विग्रह
शरम काशम बिभ्राणा धारयन्ति, नाभिभ्राणा वीणाम पक्षिणाम भ्राणम शब्द यस्याम सा विभ्राणा, न विभ्राणा अविभ्राणा अत्र नए समास। पक्ष शब्द रहता, न अविभ्राणा नाविभ्राणा पक्ष कोलाहल युक्ता, ईदृशी नवा शरत दर्पेण कंदर्पेण साकम ससार इति शब्दानां बहुविधाभिर जटिलाभिर व्याकृतिभिः अर्थावगमानन्तरं यमकालंकार सिद्धिर भवति इति केवलं व्याकरणस्यैव बलम्। श्लेषालंकारस्य तु वर्णश्लेष पदश्लेष लिंगश्लेष भाषाश्लेष प्रकृतिश्लेष प्रत्ययश्लेष विभक्तिश्लेष वचनश्लेष रूपाणि अष्टावेव प्रकाराणि व्याकरणम् आधारीकृत्य एव प्रवर्तन्ते। यथा पृथुकार्तस्वरपात्रम् इत्यादि पदश्लेषोदाहरणे एकतो राज्ञः पक्षे अपरतश्च भिक्षुकस्य पक्षे समतास्थापकोऽर्थः श्लिष्टपदानां विग्रहभेदात् भवति। लिंगश्लेषो वचनश्लेषो वा केवलं व्याकरणगत वैचित्र्यमेव दर्शयति। यथा युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः इत्यस्मिन् पद्ये सर्वाणि विशेषणानि नेत्रे विशेष्येण संगतानि, नपुंसकलिंग द्विवचनान्तानि तथा तनु विशेष्येण संगतानि स्त्रीलिंगैकवचनान्तानि मन्यन्ते इत्यहो संस्कृत भाषा व्याकरण वैशिष्ट्यम्। तथैव प्रत्ययश्लेषस्य उदाहरणभूते दहमुचित रुचिस्यान् नंदिता सा तथा मे इत्यादि पद्ये द्विविध संदिच्छेदो भवति। स्यात् नंदिता स्याम नंदिता चेति, अहम नंदिता स्याम सा मे नंदिता स्यात् इति उत्तम पुरुष प्रथम पुरुषयो प्रत्यय भाग मात्र भेदः। नंदकस्याम इत्यर्थस्य पक्षे कृत संज्ञकः त्रिच प्रत्यय, पुनः नंदिता स्यात् इत्यर्थस्य पक्षे नंदिनो भावः नंदिता इति विग्रहे तद्धितगतस्तल प्रत्यय। अतो वैयाकरण प्रयोगो यम। विभक्तिश्लेषस्य उदाहरणम् अपि पूर्णतया व्याकरणेन अनुप्राणितं वर्तते। यथा सर्वस्वं हर सर्वस्व त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुख्यम आयासि तनुवर्तनम्। अस्मिन् पद्ये संस्कृत व्याकरण चमत्कार प्रभावात् शिवभक्तेन कृता शिववंदनेयं सुप्तिं विभक्ति विपरिवर्तनेन दस्यु कर्म पर कोपदेश रूपेण परिणमते। शिव प्रार्थना पक्षे हर भव शब्दौ सुविभक्तौ प्रयुक्तौ, परंतु दस्यु परकोपदेश पक्षे तिंग विभक्ति रूपेण प्रयुज्येते। तथैव शिव प्रार्थना पक्षे नय तनु शब्दौ सुविभक्ति रूपौ आयास शब्दस्य तिंग रूपः, किंतु दस्युपदेश पक्षे नय तनु शब्दौ तिंग विभक्ति रूपौ आयास शब्दस्य सुप रूपः। अतोत्र विभक्ति भेदेन शब्द भेदः, शब्द भेदेन च अर्थभेदः। अतः श्लेषस्य सिद्धि केवलं व्याकरणगत शब्द स्वरूप
परिवर्तनेन जायते। अनेनैव विधिना स्वयं च पल्लवा ताम्र भास्वत्कर विराजिता प्रभात संध्ये वा स्वाप फललुब्धे हितप्रदा। इत्यस्मिन् श्लोके अभंगश्लेषः सभंगश्लेषः चेति द्वावपि श्लेषभेदौ तदैव चरितार्थतां गच्छतो यदा पार्वती प्रभात संध्ययो रुभयो पक्षे प्रयुक्ता द्व्यर्थका शब्दा भिन्न भिन्न समास विग्रह द्वारा प्रकटीक्रियन्ते। अतः शब्दालंकार प्रयोगेषु शब्दशास्त्रस्य व्याकरणस्य प्रभूतम् अपरिहार्यं च योगदानं परिलक्ष्यते। वयम् अवलोकयामः यत् अर्थालंकार विवेचनेष्वपि बहुत्र व्याकरणशास्त्रस्य अवलम्बनं गृहीत्वैव अग्रे सरणं भवति। समग्रोऽपि अलंकार विस्तारः विशेषेण उपमा प्रपंचः पूर्णतया व्याकरणम् आश्रित्य तिष्ठति। काव्य प्रकाशे मम्मटाचार्यः पूर्णोपमायाः श्रौत्यार्थी रूपं भेदद्वयं व्याकरणम् आधृत्य एव विधत्ते। यथादि साम्यबोधक शब्दानां प्रयोगे श्रौति तुल्यादि शब्दानां प्रयोगे चार्थी इत्यतीव सूक्ष्म भेदस्तेन प्रकल्पितः यथा सः प्रतिपादयति। यथेव वादि शब्दा यत्परास् तस्यैव उपमानता प्रतीति रीति यद्यपि उपमान विशेषणान्येते तथापि शब्द शक्ति महिम्ना श्रुत्यैव षष्ठीवत् संबंधं प्रतिपादयन्ति इति तत्सद्भावे श्रौति उपमा। साम्य पर्यालोचनया तुल्यता प्रतीति इति साधर्म्यस्य आर्थत्वात् तुल्यादि शब्दोपादाने आर्थी। अत्र श्रौत्यार्थी भेदावबोधनाय षष्ठी विभक्ति माध्यमेन आचार्येण व्याकरणशास्त्र साहाय्यमेव गृहीतम्। तस्य सुस्पष्टं व्याख्यानं कृतं वामनाचार्येण झलकीकरेण। राज्ञो राज्यम् इत्यादौ स्वप्रकृत्यनन्तरम् उपात्ता षष्ठी विभक्ति स्वप्रकृत्यर्थे राजनि स्वामित्वं प्रत्याययन्ति तद्विशेषणं भवन्त्यपि यथा राजराज्ययो स्वस्वामी भाव संबंधं प्रत्याययति तथा उपमाने उपमानतां प्रत्याययन्तोपि यथेव वादि शब्दः उपमानोपमेयो साधर्म्याख्य संबंधम अर्थात साधारण धर्म संबंधम श्रवण मात्रेण उपस्थापयन्त्येव। शब्द शक्ति स्वाभाव्यात् तथा च यथेव वादि शब्दानां साधर्म्य संबंधवाचकत्वं तत्सद्भावे उपमाया श्रौतत्वं च उपपन्नम इति। उपमाया श्रौत्यार्थी रूपौ भेदौ पुनर्वाक्यगा समासगा तद्धितगा भेदेन त्रिधा विभज्यते। तत्रापि व्याकरणमेव कारणं। पुनः श्रौत्यार्थी रूपयो भेदयो तद्धितगा नामानौ भेदौ समग्र रूपेण अष्टाध्यायी सूत्रयो आधारम आसाद्य प्रभवत। प्रथमं तद्धितगा श्रौति तत्र तस्यैव इति सूत्रेण इवार्थे विहितस्य वति प्रत्ययस्य उपादाने भवति। गुणद्रव्यादीनां साम्ये उपमा
सप्तम्यन्तेन षष्ठ्यन्तेन वा शब्देन सह वति प्रत्यय विधाने भवति। यथा मथुरावत् पाटलिपुत्रे प्राकारः इत्यत्र मथुरायाम इव इति सप्तम्यन्तेन वति प्रत्यये जाते द्रव्य सादृश्ये मथुरावत् इति प्रयोगो निष्पन्नः। तथैव मथुरावत् पाटलिपुत्रस्य विस्तारः इत्यत्र विस्तार रूप गुण सादृश्ये मथुराया इव षष्ठ्यन्तेन वति प्रत्यये सति मथुरावत् इति प्रयोगो निष्पन्नः। व्याकरण ज्ञान सूक्ष्मेक्षिकयैव अलंकार प्रयोग वैशिष्ट्यमिदं निरीक्षितुं शक्यते। पुनस्तद्धितगा आर्थी चोपमा तेन तुल्यं क्रिया चेद वति इति सूत्रेण क्रियामात्र साम्ये तृतीयांत पदेन भवति। अयमेव अनयोर व्याकरणगत विशेषः। इव शब्द प्रयोगे नूनम व्याकरणगत वैशिष्ट्यम यतो हि इवेन नित्य समासो विभक्त्यलोपः पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं च इति नियमेन नित्य समासे इव शब्द योगे समासगा उपमा भवति। अतः शब्द शक्ति वैचित्र्येण व्याकरणगत सूक्ष्म प्रभावेण चायं पूर्णोपमा विभाग प्रकल्प्यते। पाणिनिना उपमालंकार प्रपंच विशदीकरणे अन्यान्यपि सूत्राणि रचितानि। यथा चंद्रेण तुल्यं सुंदरम मुखम इत्यत्र साधारण धर्म प्रयोगे उपमानानि सामान्य वचनै इति सूत्रं प्रयुज्यते। परंतु पुरुष व्याघ्र इति साधारण धर्म प्रयोग शून्य स्थले उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति सूत्रेण उपमानोत्तर कर्मधारय समासो जायते। यथोपमालंकारे सूत्राणि इमानि विधेयकानि तथैव अभेदारोप रूपे रूपकालंकारे आधारभूतं सूत्रं वर्तते मयूरव्यंसकादयश्च येन तत्पुरुष समास विधानं भवति। यथा पूर्णोपमालंकारे तथैव लुप्तोपमालंकारेपि व्याकरण नियम प्रयोगो अधिकतरं दरीदृश्यते। काव्य प्रकाशे प्रतिपादिता वाचक लुप्ताया उपमाया सर्वेपि षड्भेदा पाणिन्यष्टाध्यायी सूत्राण्येव अनुवर्तन्ते। यथा वादेर्लोपे समासे सा कर्माधारक्यचिक्यंगी कर्म कर्तोर णमुली। वाचक लुप्ताया प्रथमम उदाहरणं समासे संघटते। यथा कामिनी गंड पांडुना इत्यत्र कामिनी गंडैव पांडु इति विग्रहे उपमानानि सामान्य वचनै इति सूत्रेण उपमान साधारण धर्म वाचक पदयो समासे सति समासगा वाचक लुप्ता उपमा जायते। तथैव असित भुजग भीषणासि पत्रो इत्यत्रापि वाचक लुप्ता। पुनः कर्मणि क्यच प्रत्यय विधानेन आधारे च क्यच प्रत्यय विधानेन द्वौ भेदौ भवतो यौ उपमानादाचारे अधिकरणाच्च इति सूत्रवार्तिकाभ्याम सिद्ध्यतः। पुनश्च चतुर्थो भेदः कर्तुः क्यं सलोपश्च इति सूत्र विधानेन सिद्ध्यति। यथा अत्र उदाहरणं पौरं सुतीयति जनं समरांतरे सा वन्तः पुरीयति विचित्र चरित्र चुंचुः
नारीयते समरसीम्नि कृपाणपाणे रालोक्य तस्य चरितानि सपत्नसेना। अत्र सुतीयति इति पदे सुतम इव आचरति इति विग्रहे कृते उपमानवाचके सुतपदे उपमानादाचारे इति सूत्रेण क्यच प्रत्ययः। अंतःपुरीयति इति पदे अंतःपुरे इव आचरति इति विग्रहे कृते अधिकरणवाचके अंतःपुरपदे अधिकरणाच्च इति वार्तिकेन क्यच प्रत्ययः। अधिकरणवाचके अंतःपुरपदे अधिकरणाच्च इति वार्तिकेन क्यच प्रत्ययः। नारीयते इति पदे नारी इव आचरति इति विग्रहे उपमानवाचके नारीपदे कर्तु क्यं सलोपस्य इति सूत्रेण क्यं प्रत्ययः। वाचकलुप्ताया पंचमं रूपं कर्मणि णमुल प्रत्यय प्रयोगेण तथा षष्ठम रूपं कर्तरि णमुल प्रत्यय प्रयोगेण निष्पद्यते। तत्र उपमाने कर्मणि च इति सूत्रेण णमुल प्रत्ययः तथा कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोग इति सूत्रेण धात्वनुप्रयोग विधानं विधीयते। यथा मृधे निदाग घर्मांशु दर्शम पश्यन्ति तम परे सपुन पार्थ संचारम संचरत्यवनीपति। अत्र निदाग घर्मांशुमिव पश्यन्ति इति विग्रहे कर्मणि णमुल प्रत्यय पार्थ संचारम इत्यत्र कर्तरि णमुल प्रत्यय। अस्मिन्नेव लुप्तोपमा क्रमे धर्मवाचक लुप्ता उपमा क्विप्रत्ययगता समासगता च द्विविधा भवति। धर्मोपमान लुप्ता समासे वाक्ये च भवति। वाचकोपमेय लुप्ता क्यचगता भवति। वाचक धर्मोपमानानां लोपे च समासगा जायते। एषु सर्वेषु प्रकारेषु व्याकरण सूत्र विधानमेव कारक तत्वम्। अतः अत्र निष्कर्ष रूपेण तथ्यमिदं स्फारीभवति यत् संस्कृत साहित्य शास्त्रे विभिन्नानां शब्दार्थालंकाराणां प्रतिपादने भूयस्त्वेन व्याकरण शास्त्रम् आधारीकृतम्। अलंकाराणाम् अनेकानि उदाहरणानि व्याकरण शास्त्रस्य पृष्ठभूमौ प्रपंचितानि। अतो अलंकार शास्त्रे भूतायाम् अलंकार विवेचनायां व्याकरण शास्त्रस्य महती भूमिका। पंडितराजेन जगन्नाथेन स्वकीये काव्यशास्त्रीये ग्रंथे रसगंगाधरे रसप्रसंगे ये अश्रव्यता रूपा काव्ये वर्जनीया दोषा प्रतिपादिता तत्रापि व्याकरण शब्द विधानमेव कारणम्। यथा एकत्र स अश्रव्यांतराणि संगृह्य वक्ति एवं रो ऋत्वस्य हल लोपस्य यण गुण वृद्धि सवर्ण दीर्घ पूर्व रूपादीनां नैकट्येन बाहुल्यम अश्रव्यता हेतु। एवं इमे सर्वेपि अश्रव्य भेदाः काव्य सामान्ये वर्जनीयाः। तेषु तेषु रसेषु विशेषतो ये वर्जनीयास् तेषामपि विस्तरेण प्रतिपादनं यदाचार्येण कृतं तत्र मधुररसेषु दीर्घसमासानां विसर्जनीयादेश सकार जिह्वामूलीयो पद्मानीयादीनां यगन्तानां यंगलुगन्तानां च शाब्दिकप्रियाणामपि प्रयोगा वर्जनीया मतः। अतः शब्दशास्त्र सरणिमेव पंडितराजोपि अनुसरति। अतोत्र निष्कर्षरूपेण तथ्यमिदं स्फारीभवति यत् साहित्यशास्त्रकारैः आचार्यैः
विभिन्नानां काव्यसिद्धान्तानां प्रतिपादने भूयस्त्वेन व्याकरणशास्त्रं विशेषरूपेण पाणिनिप्रणीतं व्याकरणशास्त्रम् आधारीकृतम्।